Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medico Maharathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, our today's session is PYQ mixed bag session, and this session is targeting upcoming exam NET PG for year 2023 and other upcoming exams also. So my dear friends, as you all know, PYQs are gold standard or vital points for every exam. आज हम पी वाई क्यू क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम पहले भी करते रहे, हमारा तो हर एक सेशन जो होता है उसमें पी वाई क्यू होते ही होते हैं, लेकिन आज इस सेशन को मैंने नाम दिया है पी वाई क्यू मिक्स्ड बैग सेशन। हर बार मैं कुछ अलग नाम रखता हूँ, लेकिन उसमें पी वाई क्यू डालता ही डालता हूँ, क्योंकि पी वाई क्यू जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है हर एक एग्जाम के लिए। बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं और वही टॉपिक ही तो रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एग्जाम का पैटर्न में जो चेंज होगा वो ऑप्शन होंगे या ऊपर की हिस्ट्री चेंज होगी। अगर वन लाइनर होगा तो थोड़ा सा टॉपिक ऊपर नीचे होगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टिल नाउ व्हाट यू हैव डन इट इज़ वेरी बेस्ट। जो आपने अब तक कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक अगर आपने पी वाई क्यूज नहीं किए हैं तो पी वाई क्यूज जरूर कर लीजिए। ओके, अब तक आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट बच गया है, मेरा वो सब्जेक्ट बच गया, अब तक जो कर लिया है उसे करिए। और उसके साथ अब क्या करना है, पी वाई क्यूज अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लास्ट 2 ईयर्स के पी वाई क्यूज उठाइए और उन्हें 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 से 2 बार जरूर कीजिए, एक बार भी कर लेंगे तो बहुत है, एक बार पूरा ध्यान से कर लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वन थिंग आई वांट टू से दैट कि पी वाई क्यूज करने हैं, मतलब करने हैं। इट विल एड अप पॉजिटिव पॉइंट्स टू योर मार्क्स। ओके, आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे, इसलिए must must attempt PYQs. So let's start our today's session, and here we are going to attempt many PYQs. So let's start. So question number 1 for the day: a 35-year-old female presented to OPD. Physical examination findings are given in image. Which structure is affected in this condition, my dear friends? So here this image is related to a condition that is POD orange, and here there will be involvement of subdermal lymphatics. So here there will, we can see involvement of subdermal lymphatics. So here the correct answer will be option number B, and this condition is POD orange, and the correct answer will be option number B. A young male presented with slow growing midline swelling in anterior part of neck after 6 months. After 6 months, bilateral cervical lymphadenopathy developed. Histopathology study is given below. All of the following are correct about this condition except. So my dear friends, lymphatic spread, you can see clearly in image. Yes, it is correct. Specific nuclear pattern on histology, yes. Has excellent prognosis, yes. So A भी correct, B भी correct, C भी correct, लेकिन D में गड़बड़ है। FNAC is not a diagnostic part. So ये जो नोट है ना, इसने सब गड़बड़ कर दी। सो एक्सेप्शन क्या होगा, सारी करेक्ट है D को छोड़ के। सो द D is here a correct answer. FNAC is diagnostic criteria. इसने लिख रखा है FNAC is not a diagnostic criteria, my dear friends. A 35-year-old patient presented with severe abdominal pain and vomiting. His vitals are stable, but the patient was unstable, having hypotension. The radiograph is given below. Okay, what is most effective to treat this patient? So, my dear friends, what do you feel? What this radiograph is showing to you? So, my dear friends, here it is a case of intestinal perforation, which is showing you pneumoperitoneum. ओके, ये क्या है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन का केस है, और ये क्या शो कर रहा है, न्यूमोपेरिटोनियम, एंड यू कैन ट्रीट दिस यूजिंग resuscitation and laparotomy. So here the correct answer will be option number D, my dear friends. Okay, let's go to. An 11-month-old was brought to emergency with abdominal pain and multiple episodes of vomiting. On examination, mass was palpable in right lumbar region. Barium enema is given below. What is diagnosis? So my dear friends, here the image is given, barium enema image is given, and you have to tell what is the diagnosis for this condition, my dear friends. So here this condition is option number A, that is intussusception. ये जो condition इस image में दिख रही है, it is intussusception. Here the correct answer will be option number A.
A patient presented to emergency with claudication of calf muscle, numbness in thigh with impotence, image showing gangrene of foot. Okay, which artery is involved? So examiner क्या पूछ रहा है? आर्टरी का नाम पूछ रहा है. ओके उसने गैंग्रीन ऑफ फुट दे दिया है. उसने बोला है कि क्लोडिकेशन है काफ मसल में. ओके काफ मसल में क्लोडिकेशन है, नमनेस है थाई में विद इम्पोर्टेंस. तो क्या उसका रीजन हो सकता है फीमोरल आर्टरी? हो सकता है? नो, इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट. सो हियर द करेक्ट चॉइस विल बी aortic iliac bifurcation. So here the correct answer will be option number A. My dear friends, question number 5 done. Let's go to next question. A 45-year-old female presented with Galactorrhoea. Her urine pregnancy test was negative. MRI brain revealed a large pituitary tumor. Patient refused to undergo surgery for tumor. Which of the following drug for treatment of this patient? पेशेंट के एमआरआई में क्या आया है? पिट्यूटरी ट्यूमर आया है. ठीक है, अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर ड्रग का नाम पूछ रहा है जो इस पेशेंट की ट्रीटमेंट में यूजफुल हो सकता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन. ब्रोमोक्रिप्टिन will be correct choice of drug for this patient who is suffering from galactorrhea and having large pituitary tumor. So let's. A 73-year-old man was bedridden for 15 years. Okay, the image of bed sore is given. Here you can see. Examiner is asking the grade of bed sore. So my dear friends, which grade do you think will be correct answer here? So according to this image, the correct answer will be option number D, that is grade 4. Okay, and here you are gonna see all grades image on next page. Let's see. Grade 1. Grade 1 क्या है? Non blanchable erythema of intact skin. Here you can see it is grade 1. Okay, और grade 1 का प्रोग्रेशन कैसे होता है अल्सर का? ठीक है, और कहाँ से कैसे वो ट्रेवल करेगा, क्या उसका फॉर्मेशन होने वाला है, वो है इमेज नंबर 1, ग्रेड नंबर 1. ग्रेड नंबर 2, इसमें पार्शियल थिकनेस है जो वो उतर जाएगी. इसमें स्किन की थिकनेस नहीं उतरी थी, और इसमें और इस इमेज में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आराम से. ठीक है, here you can see also this image. Grade number 3. Okay, full thickness of skin is lost. पूरी थिकनेस गायब हो चुकी है. ग्रेड 4 एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन, और हमारी इमेज में क्या दे रखा है? एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर द करेक्ट आंसर विल बी ग्रेड नंबर 4, जिसमें कि एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन दे रखी थी स्किन की. ओके, सो आई थिंक चारों ग्रेड्स क्लियर हो चुकी है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A 45-year-old female underwent thyroidectomy. On third day, she developed perioral numbness. Further investigation involves free T3, T4, no. Calcium phosphate PTS level, yes. Okay, because ये तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जो फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन में चाहिए वो क्या है? कैल्शियम फोस्फेट एंड PTS levels. Okay, so my dear friends, here the correct answer will be option number B. Identify the stapler. Okay, you have to identify the stapler given in image. My dear friends, here क्या ये सर्कुलर स्टेपलर है, क्या ये एंडो स्टेपलर है, क्या ये स्किन स्टेपलर है, या फिर ये लीनियर स्टेपलर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज लीनियर स्टेपलर. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इट इज लीनियर स्टेपलर. ओके, a chronic tobacco chewer for 30 years presented with swelling of left cheek. On examination, a white membrane was seen over gingivo-mucosal fold. What will be your next line of management? Next line of management will be surgical excision and biopsy, my dear friends. So इस केस को देखने के बाद जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्जिकल एक्सिजन एंड बायोप्सी, माय डियर फ्रेंड्स. An alcoholic patient presented with epigastric pain radiating toward back with anorexia, nausea, vomiting. Serum amylase is 1400. Other parameters are normal. What is most likely diagnosis? So my dear friends, एक अल्कोहलिक पेशेंट है जिसको एपिगेस्ट्रिक पेन है, वो रेडिएट कहाँ हो रहा है? टुवर्ड बैक विद एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग. सीरम अमाइलेज है इसका 1400.
बाकी सब ठीक है। तो इसका करेक्ट डायग्नोसिस क्या होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स? हियर द करेक्ट डायग्नोसिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसके गिवन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होगा। So my dear friends, let's go to next question. A child presented with following X-ray. Okay. What is next line of management? Immediate endoscopic removal, immediate bronchoscopic removal, Halmic maneuver, tracheoscopy. So my dear friends, this image is very favorite image. पिछली बार पूछा था लोकेशन क्या है, इस बार पूछ रहा है कि इसका मैनेजमेंट क्या है. So my dear friends, here the correct answer will be option number A, that is immediate endoscopic removal. A will be the correct choice for this given condition in this image, my dear friends. Let's go to next question. A patient is diagnosed with complicated fistula in anus. What is gold standard imaging modality? So my dear friends, here the gold standard modality will be MRI. MRI will be correct choice of imaging pattern for fistula in anus, complicated fistula in anus. So let's go to next question. Components of child pug score are. So my dear friends, you have to choose correct components of child pug score. So option number A, encephalitis, AST, albumin, bilirubin, prothrombin type. क्या यह करेक्ट है? नो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, encephalitis, ascites, albumin, bilirubin, prothrombin time. It is a correct option here. These are components of child pug score, my dear friends. So here the correct answer will be option number B. Which of the following is not true about idiopathic hypertrophic pyloric stenosis, my dear friends? So, which of the following is not true? It present with non-bilious vomiting. ये तो correct है जी. USG is 100% sensitive to detect IHPS. Okay, correct है. It is hypertrophy of longitudinal muscles. क्या ये हाइपरट्रोफी होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की? नो माय डियर फ्रेंड्स, हियर इट इज इनकरेक्ट चॉइस. ऑप्शन नंबर सी, इट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर डी, इट इज सीन hypocalemic alkalosis is seen here. So option number C, it is a correct option here, and it is a incorrect statement for idiopathic hypertrophic pyloric stenosis. A 10-year-old child, MYC2 mutation on histopath, small round cell are visible and synaptophysin is positive. Most probable diagnosis for a lesion at tibial diaphysis with reaction visible on surface of bone will be. So my dear friends, the correct answer for this given condition will be Ewing's sarcoma. राउंड सेल्स हैं, विजिबल, ओके, मिक2 म्यूटेशन है, साइनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव है. एग्जाम में पूछ रहा है कि टेबियल डाइफाइसिस पर रिएक्शन विजिबल है बोन के सरफेस पे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एविंग सार्कोमा. A 40-year-old man with history of alcohol intake for many years developed liver cirrhosis. Okay, एक अल्कोहल इंटेक करने वाले पेशेंट की हिस्ट्री है जो कि 40 इयर्स का है, वहाँ क्या डेवलप हो चुका है? लिवर सिरोसिस. नाउ ही स्टॉप टेकिंग अल्कोहल एंड कम टू यू विद विड्रॉल सिम्टम. अल्कोहल लेना छोड़ा तो विड्रॉल सिम्टम आए. अब विड्रॉल सिम्टम की ट्रीटमेंट करनी है तो कौन सा ड्रग काम आएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायazepam. नो, it is not going to help with this withdrawal symptom. Option number B, yes it will. Option number C, no. Option number D, no. So here the correct choice will be option number B, my dear friends. Lorazepam, it is a drug of choice for treating this withdrawal symptom here, my dear friends. And this question repeated 3 times. So my dear, all are true about anemia of chronic disease except, all are true about anemia of chronic disease except hepcidin increased. Okay. Ferritin is low. Not okay. Can be due to chronic infection. Okay. TIBC is increased. So my dear friends, here the incorrect choice will be, the exception will be option number B. Ferritin is high. But here it is given ferritin is low. So here the correct choice will be option number B, my dear friends.
A 29-year-old lady came to psychiatry OPD with symptoms of hypomania. There is history of past episode mania. Now she is planning to conceive. Which drug should be avoided? Option number A, option number B, option number C और option number D. So option number A से start करते हैं. Valproate. Valproate. It is correct. दिस ड्रग जनरली लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ये ड्रग क्या करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज करता है, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए और करना ही होता है. लिथियम, इट लीड टू एब्स्टीन एनोमली, सो इट इज आल्सो अ ड्रग टू बी अवॉइडेड. ऑप्शन नंबर सी, इट इज यूजफुल. ओके, इट इज नॉट नीडेड टू बी अवॉइडेड. ऑप्शन नंबर डी, ये भी चलेगा, इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही ड्रग अवॉइड करने होते हैं. तो अब आप बोलोगे करेक्ट चॉइस कौन सी है? सो माय डियर फ्रेंड्स, द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज इन एग्जाम वी हैव टू चूज वन आंसर and that one answer is option number A. It will be more correct option here, my dear friends. So the correct choice will be option number A. A 45-year-old female presented with easy fatigability. On examination, she was found to be pale and HP was 6 gram. Which of the following is common feature in peripheral smear? एक 45-year-old फीमेल है, उसका एचबी है 6 ग्राम और वो क्या है? पेल है. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर द करेक्ट फीचर, common feature on peripheral smear will be, it will be microcytic and hypochromic. क्या इसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है? ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ करेक्ट चॉइस हियर माय डियर फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर बी, microcytic hypochromic, it is a common feature in peripheral smear for given patient. A 34-year-old male presented with episodic headache, palpitation and repeated sweating. On examination, a small suprarenal tumor is found. What will be the diagnosis? एक 34 ईयर मेल है, प्रेजेंटेड विद एपिसोडिक हेडेक. ओके, पल्पिटेशन भी है, रिपीटेड स्वेटिंग भी है. क्या इसका आंसर हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, टेम्पोरल आर्थराइटिस. नो. माइग्रेन? नो. एड्रिनल एडिनोमा? नो. So my dear friends, here the correct answer will be pheochromocytoma. Pheochromocytoma will have all these features. So here the correct answer will be option number A, that is pheochromocytoma. A 40-year-old man with 15-year history of smoking 10 cigarettes per day, present with an episode of mild hemoptysis. Chest X-ray shows a 3 centimeter upper lobe mass near the apex. Which is next best step for management of this patient? अपर लोब में अपेक्स के पास मास प्रेजेंट है 3 सेंटीमीटर का, चेस्ट एक्सरे में ऐसा है. अब इस पेशेंट का अगला बेस्ट स्टेप क्या है मैनेजमेंट के लिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोना डू सीटी गाइडेड बायोप्सी. ब्रोंकोस्कोपी नहीं है, स्पूटम साइटोलॉजी नहीं है, स्पूटम फॉर एएफपी में नहीं है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीटी गाइडेड बायोप्सी will be the correct choice for this patient, my dear friends. A 10-year-old boy with intentional tremors, hepatomegaly, and CNS changes came to OPD with following image. Okay. Siblings also have the same disease. This is due to deposition of. So, my dear friends, this is due to deposition of option number A, that is copper. एंड सिबलिंग्स आल्सो हैव द सेम डिजीज. ये सेम डिजीज क्या है? ये है विल्सन डिजीज. ओके, विल्सन डिजीज में हम प्राइमरी साइट जो आई की है वहां पर देखेंगे. क्या? कॉपर डिपोजिशन, हिपेटोमेगली इसने बोल रखा है, और इंटेंशनल ट्रेमर्स. सो दिस ऑल थिंग्स, ऑल सिम्टम्स आर रिलेटेड टू विल्सन डिजीज. So here the correct answer will be option number A, that is due to copper deposition, my dear friends. A patient of acute diarrhea presented with weakness of lower limb and gradually progressing upward and subsequently developed quadriplegia. His deep tendon reflex were absent. Pain and proprioception is preserved. What is most likely diagnosis? So my dear friends,
क्या है पेशेंट को, क्या है एक्यूट डायरिया है, वीकनेस है लोअर लिम्ब की, और क्वाड्रिप्लेजिया भी डेवलप हो चुका है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट है, और proprioception is preserved. So here, according to all this given history, the correct answer will be option number B, that is Guillain-Barré syndrome. That is Guillain-Barré syndrome. My dear friends, here the correct answer will be option number B. A man present with 18-year history of exposure to asbestos. Which of the following is most likely to develop in this patient? So my dear friends, एक आदमी है, उसकी 18 साल की हिस्ट्री दे रखी है किसको, एक्सपोजर को लेके, एस्बेस्टोस को. सो हियर दिस पेशेंट इज गोइंग टू likely going to develop mesothelioma. Mesothelioma here will be the correct answer, my dear friends, because this patient is having exposure, continuously exposure of asbestosis, and that will lead to mesothelioma. Okay. Giant V waves, giant V waves in JVP is seen in. So my dear friends, giant V waves in JVP are generally seen in tricuspid regurgitation. Generally giant V waves किसमें दिखती है, JVP में. Giant V waves in JVP is seen in tricuspid regurgitation. So here the correct answer will be option number A. A 30-year female has difficulty in standing up from squatting position, cannot comb her hair, okay, and is presented with heliotrope, cannot comb her hair, and is presented with heliotrope type of rash around her eyes and over the knuckles. Over the knuckles, what will be the probable diagnosis? So my dear friends, what do you think? 30-year-old female, difficulty in standing from squatting position, cannot comb her hair, okay, और वहां पर एक रेस भी प्रेजेंट है, हेलियोट्रोप टाइप ऑफ रेस ओवर आइज, ओवर नकल्स. सो हियर इट इज अ केस ऑफ myositis. Which myositis? Dermatomyositis. It is a case of dermatomyositis, and the correct answer will be option number B. A young female patient presented with distended neck veins on aspiration, edema in lower limbs, and features of ascites. On further examination, a pulsation is visible better than fat. On auscultation, no murmur, no parasternal nerves is noted. Okay, S3 heart sound is present. क्या बोल रहा है, S3 heart sound present है. What will be most common cause for this condition? So my dear friends, the most common cause for this condition will be pericarditis. कैसा pericarditis? Constrictive pericarditis here will be the most common cause for this given condition. Child has developed recurrent lung infection with thickened sputum. CXR shows bronchial wall thickening. He has been suffering from steatorrhea since birth. Which of the following is first differential diagnosis? So here the first differential diagnosis according to this given condition will be cystic fibrosis. Cystic fibrosis, it is gonna be first differential diagnosis, my dear friends, and here the correct answer will be option number A. So my dear friends, here we discussed 29 PYQs of surgery and medicine, and I hope that it will surely help you out. And in before exam we will also have other session, other PYQ session we are going to discuss. And just I want to say that keep practicing. 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में अब तक बोले कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो अब आप कर सकते हो. PYQs को प्रैक्टिस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स. अभी तक कुछ नहीं किया तो PYQs उठा लीजिए, कुछ भी नहीं किया है तो कुछ तो कीजिए, और जिसने कुछ कर रखा है वो भी PYQ करे, PYQs प्रैक्टिस करें. So my dear friends, I hope that you all will surely practice PYQ. and ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी ऐसे सेशन मिलते रहें. और यही है मेन चीज़, यही है कि PYQs अटेम्प्ट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और खुद को पॉजिटिव रखिए. ठीक है, GTF देने का कोई मतलब नहीं है, PYQs कीजिए, और जो चीज़ आपके पास है उसे प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, सोशल मीडिया को अवॉइड कर दीजिए टोटली. अवॉइड सोशल मीडिया फ्रॉम नाउ, ताकि आपके अंदर कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आए बाहर से सोशल मीडिया के थ्रू. सोशल मीडिया अवॉइडेड रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा.
उसे अवॉइड कीजिए, ठीक है। और मेन सोर्स जो मोटिवेशन का होता है हम खुद होते हैं और हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत बात कीजिए, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और बस प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, PYQs जरूर प्रैक्टिस करें, और जो आपने अब तक पढ़ लिया उसे रिवाइज कर लें एक बार, और क्या, ठीक है, इमेजेस देख लीजिए, PYQs देख लीजिए, इट इज गोइंग टू बी हेल्प यू लॉट। थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।